میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم۔ میں آپ کی خدمت میں شروع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہمارے ملک کی اس وقت اکنامک سچویشن ہے اور جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں، جو ہماری پلیٹ میں اس وقت جو خالی ہے اور کچھ چند ایک بینیز وہ بھی ہم نے جو ادھار لے رکھی ہیں، اور جس طرح سے ہم نے ترلے منتیں کر کے اور ہر ان کی جائز ناجائز بات مان کے ہم نے جو IMF سے جو قرضہ لیا ہے اور جو ہم نے پہلے قرضے لیے ہیں، عام پاکستانی بالکل کنفیوز ہے کہ کیا ہم ایک ایسا ملک جو کہ ایگریکلچر بیسڈ ہے، جس پہ پاس 5 دریاؤں کی دھرتی ہے، ہمارے پاس ہر طرح کی پہاڑ ہیں، گلیشیئرز ہیں، ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس باقاعدہ پریریز اور یہاں وہ لینڈ ہے، فلیٹ لینڈ جسے کہتے ہیں، کہ جس پہ ہم گندم، چاول، کپاس، چنے، مکی، ہر چیز ہم اگا سکتے ہیں، اگاتے رہے ہیں، اور بلکہ بریڈ باسکٹ جو تھی پورے انڈیا کی، اس میں یہ بہت سارا ہاتھ تھا، جو ایک پارٹ آف پنجاب جو کہ پاکستان کے پاس ہے۔ تو یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی؟ ایک آدمی کو بالکل اس بات کا احساس نہیں ہے جب ان 2 خاندانوں کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے بے دردی سے ملک کو لوٹا ہے۔ تو لوگوں کو جو ان کو جن کے بینیفیشریز ہیں، جن لوگوں کو یہ جائز ناجائز اور بغیر میرٹ کے ان کے بچوں کو یونائٹڈ نیشن کی پوسٹیں، ورلڈ بینک کی پوسٹیں، امبیسیز میں ان کو کمشنر، ڈیپٹی کمشنر، سیکٹیرین بیس کے اوپر ان کو بھرتی کیا ہوا ہے۔ بڑی بڑی جو ٹاپ کی پوسٹیں ہیں لا اینڈ آرڈر میں، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ جو مینجمنٹ جو ہے، جو جس میں کمشنر، ڈیپٹی کمشنر ہے، ایون آرمی کی بڑی بڑی جو پوسٹیں ہیں، ایون جو بینکنگ میں بڑی بڑی پوسٹیں ہیں، وہ رشوت کے طور پر جو ان کی کنسٹیچوئنسیز میں ہے، اس کو وہ یعنی حکومت کے، یعنی آپ ہی کے ملک کے فنڈز، آپ ہی کے ملک کی جو ایسٹس ہیں، ان کو وہ دے کر کس طریقے سے انہوں نے پھر بے دردی سے اس ملک کو لوٹا ہے۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں چودھری محمد علی تک، جنہوں نے وہ کانسٹیٹیوشن جو تھا پاکستان کا لکھا، اور وہ ایک بیوروکریٹس تھے، اور ان کا ایک ارائی فیملی سے ان کا ایک تعلق تھا۔ جیسے puzzled, despite having studied finance and economics at the world's best universities. The following question remains unanswered. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world. The Western world depends on Africa in every possible way, since alternative resources are scarce out here. So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn to sustain that image of Africa globally. Ad campaigns paid for by innocent people under the impression to help with their donations. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. We all know the dollar is worthless, while the euro is merely charged with German intellect and technology, and maybe some Italian pasta. How can one expect donations from nations that have so little? It's super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our gold and diamonds. But instead, you should come empty-handed, filled with integrity and honor,
We want to share with you our wealth and invite you to share with us. The perception is that a healthy and thriving Africa would not disperse its resources as freely and cheaply, which is logical. Of course, it would instead sell its resources at world market prices, which in turn would destabilize and weaken Western economies established on the post-colonial free meal system. Last year, the IMF reports that 6 out of 10 of the world's fastest growing economies are in Africa, measured by their GDP growth. The French Treasury, for example, is receiving about $500 billion year in, year out. Foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt they forced them to pay. Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. In 2008, he stated that without Africa, France will slide down in the rank of a third world power. This is what happens in the human world, the world we have created. Have you ever wondered how things work in nature? One would assume that in evolution the fittest survives. However, in nature, any species that is overhunting, overexploiting the resources they depend on as nourishment, natural selection would sooner or later take the predator out because it offsets the balance. हैं कि हमने जो कर्जा ले रखा है, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि हमने कर्जा लिया हुआ कहाँ से। तो मैं आपकी खिदमत में पहले कुछ थोड़ा सा अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान का जो टोटल लोन है ना, ये 46.78 US डॉलर है, यानी बिलियन डॉलर्स। ये सितंबर 2022 का मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ, और टोटल लोन जो है ये अपडेट होता है यानी मंथली बेसिस पे। तो मैंने आपको एवरेज जो बता दिया है वो 46.784 जो बिलियन US डॉलर्स है। अब मुझे ये बता लेने दे आपको कि ये हम कौन कौन से अदारे जो हैं ना जिनसे हम लोन ले सकते हैं। मैं आपको पेरिस क्लब का बताता हूँ कि उन्होंने हमें कितना लोन दिया। उनका लोन था 10.7 बिलियन। ये 11 अक्टूबर 2022 तक की मैं फिगर कोट कर रहा हूँ। और पाकिस्तान ने जो उनको रिटर्न करना था ना, पाकिस्तान ने पेरिस क्लब को रिटर्न करना था 1.1 बिलियन, ये उन्होंने देना था टोटल 10 में से 24 सितंबर 2020 को। अब वर्ल्ड बैंक से भी जो हमने लोन ले रखा है वो 40 बिलियन US डॉलर है, और अब ये इन असिस्टेंस मिला था, और 10 मार्च 2022 तक ये इतना वो हम यानी 40 बिलियन हम वर्ल्ड बैंक से ले चुके थे। Let me talk about what's the latest on Pakistan. The latest on Pakistan is that Pakistan was so broke for foreign exchange. And you know, we in India should know what it means to be broke with foreign exchange. We faced that situation in 1991, in the summer of 1991, when Narasimha Rao government took over. India was on the verge of a default on its foreign payments because India did not have any foreign exchange left. And that is when the IMF bailout came in. Mind you, that was the last IMF bailout India took. That was 30 years back. Even that bailout, India did not have to utilize all of it, because utilizing all of it would have meant also fulfilling all the conditions, or which are called conditionalities for some reason, and also because India immediately reformed its economy with that 1991 budget, things began to improve and India's foreign exchange situation began to improve. So India did not need to take out that full loan from IMF. Since then, India has not had to go to IMF for any bailout. Pakistan, on the other hand, since the 80s, is now into its 13th
13th IMF bailout. And this bailout also had been stopped about 6 months back because the IMF said you are not fulfilling the conditions, or what we call in our region conditionalities for some reason. Again, I just can't help chuckling over this. But Pakistan, those are very onerous conditionalities. You have to up your taxes, you have to up the prices of goods and services that the state provides, or where the state controls prices. Fuel, for example. Pakistan fuel has become expensive now. It's becoming expensive by the month because IMF now says you have to raise your taxes on fuel, on petrol by 4 rupees a month until your overall increase goes to 30 rupees. Now, even then, at 146 to 150 rupees a liter, Pakistan petrol is about less than half the price it is in India, because Pakistan rupee is now about 176 to a dollar. So, a Pakistani rupee, 2 Pakistani rupees do not make 1 Indian rupee at this point. So, what this does is, this explains to you the larger problem. The larger problem is that inflation is now going up, governments having to up the revenues, governments upping the revenues on what is imported. What is imported leads to an outgo of foreign exchange, that leads to a shortage of foreign exchange, which means more borrowing at expensive rates, and I will tell you about that, and then it becomes a vicious cycle. So, Pakistan is caught in that vicious cycle, and that's how the more they borrow and the more they spend to import, the more their rupee weakens. So, the rupee has weakened, Pakistani rupee has weakened by 15%, by more than 15% in the last 6 months. So, अब आ गया कि हमने IMF से, जिसका नाम जो है बार बार लिया जाता है, बार बार कहा जाता है, मैं ये आपको बता दूं कि ये जो है ये है क्या। IMF जो है ना, ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स ये देती है, और वो देती है सिर्फ उन मुल्कों को जो कि एक्सपीरियंस कर रहे हों कि उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यानी उनके पास प्रॉब्लम्स हो या डिफ़िकल्टीज हों, कि वो उन्होंने जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं कि उन्होंने दूसरे कर्जे उतारने हैं, या वो जो चीज़ें उनको वो मीट नहीं कर सकते, उन्होंने अपना बजट या उनकी अपना जो उनका जो GDP है, जो उनका जो अपनी बचत होती है, वो उसको बैलेंस करके वो अपना कर्जे की किस्त नहीं दे सकते, तो वो फिर IMF उनकी असिस्टेंस को आती है, और ये वो लोन है, और वो इतनी आसानी से आपको ये नहीं देते। और मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दूं कि जो हमने लिया है, अमाउंट तो सबको अब पता होगा, अखबारों में आ चुका है, वो सब कुछ किया जा चुका है, वो बिल्कुल एक फ्रैक्शन है। जब आप इतना बड़ा लोन आप उन अदारों से जो हम लेके मुल्क में कैरी कर रहे हैं, तो उसमें जो हमने वो गिरवी रखा है, जो जिसे मॉर्गेज का नाम कहा जाता है, उसमें जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अब वो हमारा नहीं है, कराची का, वो हम गिरवी रख चुके हैं क्योंकि कर्जा लिया है। नेशनल मोटरवेज और हाईवेज हम रख चुके हैं मॉर्गेज। इस्लामाबाद लाहौर वाला M2 है, ये हम पेशावर फैसलाबाद का मोटरवे भी गिरवी रखा हुआ है, फैसलाबाद पिंडी वाला भी जो है वो हमने भी गिरवी रखा हुआ है। ये मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये किस कदर अलार्मिंग है कि अब हमारे अपने नेशनल एसेट हमारे नहीं हैं। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे, PTV की जो बिल्डिंग है वो मोटर जो है मॉर्गेज्ड है। रेडियो पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो भी सारे मॉर्गेज्ड हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान एयरपोर्ट जो हैं, ये तीनों के तीनों ये भी मॉर्गेज्ड हैं, ये भी हमारे यहाँ पाकिस्तान के नहीं हैं। मोटरवे M3 भी मॉर्गेज्ड है। इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे जो है ये 2021 में ये भी वो कर दिया गया था। अब इस्लामाबाद का जो F9 पार्क है, अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि पार्क तक हमने मॉर्गेज कर दिए हुए हैं। फातिमा जना पार्क वो भी हमने कर दिया। इस्लामाबाद की जो क्लब है वो भी हमने वो कर दिया है। आप मुझे बताइए कि जब ये हमारे मुल्क का हाल है, soaring inflation, a high current account deficit, and foreign exchange reserves barely enough to cover 2 months of imports, Pakistan is struggling to keep its economy afloat, raising the prospect that one of the world's most populous nations could soon follow Sri Lanka and default on its debt. Leaders are seeking to revive a $6 billion bailout package from the International Monetary Fund to help pay the bills.
Well, Pakistan needs more than $36 billion in financing for the fiscal year starting June. And the government has increased the cost of petrol by 20% to pave the way for a deal with the IMF. The Prime Minister has been reluctant to end energy subsidies and roll back unfunded subsidies to oil and power sectors, which are key demands by the IMF. The measures could hurt Pakistanis' wallets and spark a public backlash at a time of political instability. मैं इसके साथ साथ कुछ आपको ऑडियो दिखा रहा हूँ, मैं इसके साथ साथ मैं कुछ आपको वो स्टेटिस्टिक्स दिखा रहा हूँ, कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक अफ्रीकन इतनी हाईली क्वालिफाइड एक यंग बच्ची का मैं बता रहा हूँ कि वो तो कॉलोनियल टाइम्स थे, और देखें वो किस तरीके से उनका सोना, उनके हीरे वो ले जाकर वो मॉर्गेज नहीं करते थे। वो कहते थे जी वो जो हमने जब कॉलोनाइज किया हुआ था और तुम्हारे कुछ स्कूल थे या खर्चा हम करते थे, ये उसका तुम हमें दो वापस। तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि फ्रांस का 500 बिलियन वो कह रहे हैं कि ये मैं कर्जा वो ले रहा हूँ जो मैंने उस वक्त, अरे तूने पूरा मुल्क वो कॉलोनाइज किया हुआ था, उनके सारे एसेट्स खाते थे तुम, अभी तक खाए जा रहे। तो आप मुझे ये बताइए आप कैसे कर सकते हैं? वो जुल्म करते हैं तो वो तो एक फॉरेनर्स हैं, उन्होंने तो जब दौरे उस्मानिया को ख़त्म किया तो उन्होंने कॉलोनाइज किया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी आपको पता है कि ये सारा कॉलोनाइजेशन हुई, बंदर बांट हुई, और सारा उन्होंने ये अफ्रीका का जो तबाही की, जो मिडिल ईस्ट की जो तबाही की, जो मुसलमान मुल्कों की तबाही की, ये सब इंडो पाकिस्तान कॉन्टिनेंट की जो उन्होंने तबाही की, आप भूल गए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती कि वो उनका देखो तो रोना आता है। तो आपने क्यों किया? और अब आप देखें, चलें अब बताएं, फिर आप इकोनॉमिक सिचुएशन करें। अब जो एक आदमी चीखें मार रहा है, अपने बच्चे बेचने के लगाए हुए हैं, उसका ना वो किराया दे सकता है, ना बिजली का बिल दे सकता है, ना दूध, ना अंडा, ना कुछ वो कर सकता है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? और अभी भी आप झगड़ा किए जा रहे हैं कि हम चाहते थे कि इतनी इज्जत और एहतराम के साथ आपको बाकायदा यानी वो आपको विदा किया जाए कि एक मिसाल हो। यानी आप मुझे बताइए कि हर चीज़ जैसे एक ग्रे एरिया में, जैसे एक उजाले से निकाल कर किसी को अंधेरे में ले जाया जाए, पूरी कौम को डिप्रेशन में, पूरी कौम को एक कर्ब में आपने ये जो है वो डाल दिया। तो इसको रिवर्स करना अब आपकी मेरा ख्याल है जिम्मेदारी है। इकोनॉमिक जो मेल्ट डाउन है उसकी भी आप ही की जिम्मेदारी है। और ये मैंने कर्ज़ों का और मॉर्गेज का ये आपको इसलिए मैंने सारा एक शीशा दिखाया है, और ये भी कि ऑनर नहीं है कि इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। मैंने एक प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर का आपको बताया है। तो आप में ये मिसाल होनी चाहिए, और मैं एक बंदे की इंडिविजुअल की सिर्फ बात नहीं कर रहा। अगर मेरा ये समझे कि मेरा ये फोकस सिर्फ एक एस्टैब्लिशमेंट में, तो नहीं, ये टीम होती है, और टीम में हमारी जुडिशरी भी है, और टीम में हमारी ब्यूरोक्रेसी भी है, टीम में हमारी बहुत सारा मेरी नज़र के अंदर इसके अंदर जो पॉलिटिशियंस का भी कसूर है। अभी तक देखें कि वो आदमी रूठ के बैठा हुआ है कि जी मैं ये नहीं करेंगे मैंने बदला उतारने, मैंने वो इनके जो फादर इन लॉ हैं अमजद साहब, जनरल अमजद साहब, वो बड़ी नज़र में मैं समझता हूँ कि इनका बड़ा सब एहतराम करते हैं। अरे भाई तुम क्यों कि इस तरह की बातें कर रहे हो? एक आदमी इतनी सर्व किया उस मुल्क के, उसकी सर्विस को ऑनरेबली रिटायर होने दो, उसे इज्जत से जाने दो, उसे हार डालो, उसको अप्रिशिएट करो, तो इतना दिल बड़ा करो। और नया एक आदमी चीफ जो है मेरिट पे आने दो। कोई हर एक चीज़ एक तरह का तो नहीं हो सकता, कोई थोड़ा सा ज़रा उससे स्मार्ट होगा और कोई थोड़ा सा कमज़ोर होगा। तो ये कौम के लिए जो आपने ये कर रखा है, इसको खुदा के वास्ते मैं अपील करता हूँ कि इतना जब कर्जा हो, जब पूरा मुल्क हमने गिरवी रख दिया हो, तो अब इस पे रहम करें और जो इस मुल्क को चलने दें। लगेगा आपका वो चीफ इलेक्शन होंगे, जिसको भी मैंडेट मिलता है, मैं नहीं कहता कि ये पीटीआई को या किसी एक जमात को मैंडेट मिले, उनको इस मुल्क को प्लीज़ करने दें। और जो लोग चले गए हैं, जिस वजह से भी चले गए हैं, आप वो विच हंटिंग छोड़ें और उनको बुलाएं, एक फ़ोन कॉल करें, और ये जितने आपके एंकर्स गए हैं उनको सबको कहें बेटा घर आओ, ये तुम्हारा घर है, तुम छोड़ के कहाँ जाओगे। तो ये आप पहले ये करें। दूसरा ये इन लीडर्स को भी जो करें, और जिनका जो
پر وہ بنتا ہے حق ان کو وہاں پر پہنچائیں. اگر ایک آپ نے چوری کی ہے، ایک آپ نے کیا اور ثابت ہو گیا، تو پھر اس کو یعنی گریسفلی وہ اپنی سزا پوری کرے، اور اس کے بعد وہ اسی پبلک کا ایک حصہ بن جائے گا. اس کو بھی مستقل آپ ٹارگٹ نہ کریں. تو ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم اتنے اپنے آپ کو جب کہ گروی رکھ چکے ہیں، میں اس کو اپنے اس ویلاگ کو بہت لمبا ہو گیا ختم کرتا ہوں کہ یہ اس کو آگے پر لانگ نہیں کریں. اس کو فوری طور کے اوپر جتنی جلدی ہو سکے نوٹیفائی چیف آف آرمی اسٹاف کریں، اور جتنی جلدی ہو سکے کل ہی کریں. چاہے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہ ان کو لے کے آپ ہی نے سب سے ان کو کہا تھا، تو آپ ایم کیو ایم کو کہیں یا کسی اور جماعت کو کہیں، نہیں جاتا وہ کیوں کہ آپ ہم کا اس کی منتیں کر رہے ہیں لندن میں، یا اس آدمی دوسرے آدمی کی جو طرح وہ جو دبئی سے آتا ہے، جو آ کے منڈی لگاتا ہے سینٹ ہاؤس میں، نہ کریں. آپ گریسفلی ان کو کہہ کے ان کو گھر جانے دیں. ماشاءاللہ بھی آپ کو 1 ہفتے کے لیے یا 2 ہفتے کے لیے نہیں لگانا پڑے گا، آپ کو مارچ تک وہ ایکسٹینشن بھی زبردستی جو آپ سے یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں کرنا پڑے گا. آپ گریسفلی اپنے ٹائم پر جائیں، اور جب آپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک سویٹ میموریز چھوڑ کے جائیں. اور میں یہی جوڈیشری کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر جو غلطی ہو گئی اس کو انڈو کرنا ہے، آگے چلنا ہے. لائف مسٹ موو آن. اگر آپ یہاں کھڑے ہو کر اسی کے اوپر سلگتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، تو پہلے دیکھو اتنا ملک جو ہے آلریڈی ہم اس کو گروی رکھ چکے ہیں. اب آگے ہم اپنی جو جنریشنز ہیں، اپنے بچے ہیں، ان کے آگے سے بچے ان کے لیے کیا مستقبل چھوڑ کے جائیں گے. ان الفاظ کے ساتھ کیا ہم آنکھیں کھولیں گے. میں اس ویلاگ کو یہاں بند کرتا ہوں.